friends, welcome back to my channel, and it is 8:24 of the morning. We just woke up and now we are having, like, we had our tea and now we are having our food. Like, he's preparing for food and we are going to have it. And yeah, that's it for now. If I do anything else, I'll let you know and take you with me. Just after having our breakfast, we went downstairs into a gaming room which was there in our cottage, and we started playing games. We were enjoying our time there, and this is the clip from that time. Enjoy. जो केयर टेकर थे उस कॉटेज के, दे हैव 2 dogs. लाइक आई थिंक दे हैव मोर देन 2 dogs, बट हम 2 ही डॉग से मिले थे. तो वो अपने डॉग्स को लेके आए जब हम गेम खेल रहे थे. तो फिर उनमें से एक डॉग बहुत मीन था, जो कि फर्स्ट क्लिप में. एंड देन शी ब्रिंग अनदर डॉग एंड शी वाज लाइक सो क्यूट एंड शी वाजंट मीन एट ऑल. Yeah, that's it. Shall I give this to him? Yeah. Okay, have it. Good boy. So mean. Selfish. But still, I love dogs. But yeah. Everybody's different. Hi, Bella. Bella. Hi. Do you want food? You don't know. Hi. Do you want food? Yeah, I got her in 2000. You can be 2019. So she's been here quite a few years now. Bella, shake. Bella. Bella, shake. She has the smell of that the other dog, German Shepherd. Yeah. Give me the shake too, please. ओके गाइस, तो मैं नहा के कपड़े पहन चुकी हूँ सेकेंड डे के लिए. और मेरे फ्रेंड्स गेम खेल रहे हैं, तो पूरा जो कॉटेज है वो भी खा लिया है, हमारे वाला कॉटेज. तो मैं आपको जल्दी से आपको कॉटेज टूर दे देती हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है और इधर आसपास पेड़ और हरियाली है. बहुत ही शांत टाइप का जगह है, ऐसा रिमोट प्लेस में. और वो वाला हमारे वाला कॉटेज है. तो लेट्स टेक एंट्री इधर से है और मैं नंगे पार हूँ. तो एंटर करते ही शूज़ रखा है, शूज़ रखने के लिए. और फिर अगर बहुत प्यारी पेंटिंग्स भी कैन सी दैट. और अम्ब्रेलास के लिए भी रैक है. एंटर करते ही इधर कुछ टेम्पलेट्स है, तो गार्डनिंग से रिलेटेड है, कुछ टाउन से रिलेटेड है, ऐसे ही. और बुक्स है फॉर पीपल हु लव रीडिंग बुक्स. और मुझे बहुत एस्थेटिक लग रहा है बुक्स वाला एरिया. और फिर इधर ऐसा ही डेकोर प्ले, जिसके ऊपर ये बहुत ही प्यारा कुछ पड़ा हुआ है. सैनिटाइजर, मोर पेंटिंग्स एंड DVD. अपार्ट फ्रॉम DVD इनके पास ऐसा ये क्या बोलते हैं, इसे पोस्टिंग बोलते मे बी. तो उसके ऐसे यूटेंसिल्स टाइप में डेकोर पड़ा हुआ है, वॉच. और फिर इधर से ऊपर जाके हमारा कॉटेज आएगा. और ऐसा इन्होंने पेंटिंग लगा रखी है स्टेयर्स में. ठीक है, सो एक ये कॉटेज है, ये किसी और का. ये वाला हमारा है, जिसका डोर मैंने पहले खोला हुआ है. तो इसे हम बंद कर देते हैं. तो इधर शूज़ उतार सकते हैं. हमने शूज़ नीचे ना उतार के इधर उतारे हुए, इधर जगह टांगने के लिए. और फिर एंटर करते थोड़ा मैसी हो रखा है, बट डोंट माइंड. देखिए, ये इतना मैसी नहीं है, हमारा कमरा ज़्यादा मैसी. ये लिविंग रूम है, जहाँ पे हमें बड़ा सा TV रखा है जो चलता है. और इधर से ये व्यू है. और ये हमारा किचन है, ये पूरा हमारा किचन एरिया. और ये डाइनिंग टेबल. और इधर से ऐसा व्यू आता है जो बहुत कोरियन वाइब्स देता है. अगर आप में से कोई कोरियन ड्रामा देखता है या कोरिया के बारे में जानता है, तो डू यू एग्री कि ये कोरियन वाइब देता है? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दे रहा है. सो लेट्स गो टू रूम. हमारे रूम्स इधर से ऊपर जाके, पहले मैं वॉशरूम दिखा देती हूँ. तो वॉशरूम में वैसे दिखाने जैसे तो कुछ है नहीं, बट फिर भी
ये हमारा वॉशरूम है, मिरर एंड ऑल दैट। ओके चलो, अब हमारे पास 2 रूम है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये वाला जो रूम है वो है चारू और दहाम का। तो ये रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है और इनके रूम से ये व्यू आता है दूसरे घर का, जो कि बहुत ही प्यारा घर है, बहुत ही ज़्यादा। ओके सो ये रूम, फिर इधर हमने अपने टॉवल्स टांग रखे हैं और ये वाला हमारा रूम है, वो वाला मेरा बेड है, ये मैडी और चामित का बेड है। और हमारे रूम से हम स्टार गेजिंग कर सकते हैं और वो जो दिख रहा है ऐसा ब्लू ब्लू पहाड़ों के पीछे, वो सी है। आज हम उधर जाने वाले हैं और ऐसा है, और इसे हम खोल भी सकते हैं, पता है। आज के बाद में खोल के इधर ही अगर रूम के अंदर ये मुँह धोना हो या फेस वॉश करना हो, ये मुझे देखना हो, ठीक है। और इधर हमारे थोड़ा सामान रखा है, इसके ऊपर में हमारा गोप्रो का सामान रखा है और ये वाला मेरा बेड है और ऐसा है। मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशियस रूम है। और अब मैं तुम्हें इसे खोल के देख पा रही हूँ ना। कोई गिर सकता है बस वैसे। हेलो, सी हाउ प्रीटी, वो है सी वो, और उधर पहाड़ी पहाड़ हैं। दिस इज द व्यू ऑफ आवर गार्डन। एंड देन आफ्टर दैट हम ओशन के लिए निकल जाते हैं। बट बिफोर गोइंग टू ओशन हम एलडी पे रुकते हैं, बिकॉज वी प्लान कि हम उधर जाके पिकनिक करेंगे और फिर हम एलडी से कुछ सामान लेते हैं। देन वी वेंट टू ओशन। बट एक्चुअल में लाइक मैं स्लीपर्स पहन के गई थी, तो इफ़ इन केस कोई और इंग्लैंड में आके ओशन में जाता है तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि बहुत ज़्यादा हाइकिंग करके फिर ओशन में जाना पड़ता है। अगर तुम हाइकिंग वाला सोच रहे हो, अगर नहीं सोच रहे तो लाइक सिटी से कोई ऐसा शॉर्टकट पड़ जाता है ओशन के लिए। बट रिमेंबर, अगर तुम हाइकिंग के लिए सोच रहे हो जो कि ज़्यादा प्रीटी होता है, तो keep your shoes with you. Starting from, he's gone. go. Go. No, you go. Let's go. So now our hiking to the sea starts. Hopefully we'll get enough exercises to our legs and hike. So hopefully we'll get enough exercises to our legs. So that they stay warm. So that they stay warm. What? Take a picture. You said take a picture with poop. Where are we going, Moni? Sea? Oh, I see the sea. And I see the people as well. So Mi amor, mi amor. you said we actually parked there. Yeah. And then we are climbing from there to here. And compass and see. According to that, Ilfracombe is right here. एंड देन सबसे हाइट पे पहुंचने के बाद भी हमें एक अच्छा पिकनिक प्लेस नहीं मिलता है, तो हम और ज़्यादा हाइकिंग करके एक और प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही होती है, लाइक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की हवा। और फिर उधर बैठ के हम पिकनिक करते हैं जहाँ पे हमारे सारे सामान उठ रहा होता है। बट वी मैनेज टू डू पिकनिक एनी हाउ।
एंड देन फिर हम सिटी की तरफ निकल जाते हैं. एंड देन हम सिटी की तरफ जाते हैं. तो हम सिटी की तरफ जाके पास से बीच देखते हैं इंस्टेड ऑफ माउंटेन पे चढ़ के बीच देखने से. एंड मैं और चारू एक्चुअल बीच में जाते हैं, बट बाकी के लोग कहीं वो दोबारा माउंटेन एक छोटी से माउंटेन पे जाते हैं, बट मैं और चारू एक्चुअल बीच पे जाते हैं, जो कि बहुत ही एक रिलैक्सिंग था. और ये मेरा फर्स्ट बीच एक्सपीरियंस था, तो आई तो लव इट लाइक टू द नेक्स्ट लेवल. You make me keep me guessing, missing. She is pregnant. Oh, and she's half Mer. I think she's half Mer woman. Mer woman. Just like your tummy. Say it again. Say it again for the video, David. Shell? It's there. Seashell. After spending our whole day sea के आसपास, we came back to home and we start preparing for dinner. I felt like I got my allergies back, so I took my allergy medicine, which made me feel so sleepy. And then my friend did enjoy. They went to the indoor gaming room again and they play game without me. But I just go back to sleep. I took my shower and then I slept. Like I didn't do anything apart from that. So this is it about this video. I hope you do like this video. If you do, then please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel if you haven't. And yeah, that's it. See you in my next video. Till then, stay healthy and bye bye.